जी, आयशा बताइए किसको पहले आना है? जी सर, मारिया मारिया मखदूम को कहा था आपने। आई थिंक वो पहले आएंगी। अच्छा, तो मारिया क्या आप कहाँ से प्रेज़ेंट करोगी? मारिया, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. हुँ, Sir, हाँ, I'll start from the beginning. क्या-क्या? I'll start from the beginning. ऊँची बोलें ज़रा। I'll start from the beginning, sir. बिगिनिंग मीन व्हाट बिगिनिंग? Sir, focus group से start करूँगी जो focus group की presentation है वहाँ से. अपना वीडियो ऑन करें पहले। Okay, sir. Okay, sorry. आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। Let me check. Sir, आप ठीक है? जी जी ठीक है। Okay, sir. जी, कौन सी स्लाइड्स आपके लिए खोलनी है? ओ भाई बोल तो दो ना। Sir, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मुझे आवाज़ आ रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप Yes, sir. कौन सी स्लाइड्स खोलनी है आपके लिए? Sir, वो जो आप वाली हैं. मेरे वाली है तो उन पे मेरा नाम लिखा हुआ है, कहाँ नहीं होंगी? सर, उस पे लिखा हुआ है focus group research design PPT. फोकस ग्रुप रिसर्च डिज़ाइन। ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए वो मैं खोल रहा हूँ, ये तरीका नहीं है। आपको खुद चाहिए थी बनानी और मुझे ईमेल करनी, हम उन्हें यहाँ शेयर करते। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी आप फिल्म चलाते जाएं, हम देखते जाएंगे, ये काम तो ठीक नहीं है। क्यों आयशा? सर एक्चुअली सीरियसली मुझे मुझे यही लगा, मैंने आपको इसीलिए मैसेज भी किया था तो आपने वो सेम लिखा तो मुझे लगा कि मे बी मुझे सेम स्लाइड्स यूज करनी है। सर खुदा का दैट्स नाम व्हाई है, वो थोड़ा सर तुम मिसअंडरस्टैंडिंग। पीडर तो नहीं पीती ना? चले, आ गई है सामने, वो देखते हैं आपकी। जी, बिगनिंग यस तो सर। यहाँ से हो रही है। यस सर। हम्म, तो कितनी अस्सलाम स्लाइड्स करनी वालेकुम। है आपने, कितनी करनी सर है? एप्लीकेशंस तक करूंगी 8 स्लाइड्स में। जी ठीक है। यस सर। Assalamu alaikum everyone, this is Maria Masood and today I'm going to discuss with you about the focus group research design. Uh, in this slide, that focus groups are a qualitative method of social science research, widely used method in applied social research, health, marketing, political consulting. The first point that I want to elaborate here is this, that focus group research design are basically comes under the qualitative research. And qualitative research is a strategy for systematic collection, organization, and interpretation of a phenomena that are difficult to measure quantitatively. Basically, quantitative research, we cannot go into deep and detailed information of the topic because there the participant may get limited, so he would not have a chance to elaborate in a detail. So focus group research design basically use in a applied social research. Applied social research is basically a research that conduct to understand the complex social phenomena. So we can say that focus group discussion is frequently used to gain an in-depth understanding of social issues which influence many citizens within a society. For example, here we have a point: health, marketing, and political consulting. Let's suppose if in a country there is a issue of mental health is growing in generation or in youth. So for what focus group research design will do, that focus group may call um, some experts and some psychologists to discuss the point that how we can reduce mental health issues. And one when some marketing some brand is want to know about that how they can
explore and how they can enlarge their marketing, and they want to know about their products. So they will reach towards cost customers that are the regular or routine customers of that brand. So they will like gain the information about the opinions of the customers about their products and their services to like enhance their marketing and their brand quality also. And what political consulting is, political consulting is basically a form of consulting that consists primarily of advising political comparison and development of production and in mass media. For example, if a news channel wants to grow its PR, so they may call some political consultant to gain some advice that how they can like enlarge their mass media production and development. At the end, we can say that focus group would be defined as a group of interacting individuals that have some common interest or characteristics that brought together by a moderator researcher who uses the group and its interaction in a way to gain information about a specific topic or a focused issue. Now, the second point is it is a special type of group that carefully planned discussion designs to obtain perceptions and on a defined area of interest in a permissive, unthreatening environment. Typically, focus groups are some type of groups that which encourage the participants to participate in a discussion which is pre-planned by a researcher. Before, like in what happened in here, that before the commencement of the session, the facilitator designed a discussion guide to ensure that the participants to cover topics which are interest to the researcher. So here basically researcher resembles a group of individuals to discuss a specific topic, aiming to draw the required point from the complex personal experiences, beliefs, perceptions, and attitudes of the participants. So now this here the researcher's duty is also to conduct a session in a way that no participants feel like stressed or reserved to or threatened to discuss their point of view. So participants have should feel free to discuss their point of view with the researcher. So next slide, please. Yes. In-depth discussion with small groups of 8 to 10 people, with the discussion usually lasting 1 to 2 hours. Now here, this is the design of focus group, that how it looks alike. Basically, it consists of like 8 to 10 people that and a session that takes like 1 to 2 hours of a time. What happens here is this, that a focus group researcher or a focus group research method brings 8 to 10 people in a room to provide feedback regarding a product, service, concept, or marketing campaign. As I have told previously that so here moderator is a mandatory person who will conduct the session. Now the moderator's goal is to hear from everyone to encourage different ideas to elicit thoughtful response from all the participants. And respondents may be carefully selected based on a set criteria. So here, like, sorry, what is I want to say here, like discussion should be like where, sorry, What yes, happened? discussion, yes, sir. Discussions should be like if a researcher want an in-depth discussion with the participants, like they could have they could set a standards earlierly and then they can like brief out their participants that we are going to discuss about this topic. So yes, In what context you are asking about set the standards earlier in this regard? sorry, sir. In which context you are asking about the set the standards earlier
regarding both of these points, where you can fit this. सर मुझे आपके क्वेश्चन, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही. आप सुन सकते हैं जी? हेलो हेलो हेलो. यस सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, Yes, बाकी sir, yes, sir. सारी क्लास सर, सुन रही आ है. जिसको सवाल कर रहा हूँ उसको नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ. नहीं सर, आ गई है, मुझे समझ आ गई है. क्या आ गई ये बताइए. सर बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिस्पॉन्डेंट्स में बी केयरफुली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल, if a researcher is talking about नो, आप पानी में मदानी नहीं डालें, आप रेलेवेंट बात करें. यू टोल्ड अस yes sir, द moderator should respond or continue according to the set standards. I am ambitious to know about what are those set standards. yes sir. Sir, what happens in basically focus group is this, that researcher sets standards like that what he wants to gain from the participants. So he's set his standards before the discussion. So, sir, what basically when you have like 8 to 10 people in a room, they will participate in discussion. Their opinions may like influence one another's opinion. So, discussion may deviate researcher's like point that what he wants to gain. So here the researcher or moderator should be a keen observer. He should be a good listener. That what he wants from the whole discussion. So he have to like set standards of achievement before the Maria discussion. Maqsood, This is what I. may I know? Yes, sir. Do you have gone through any other Yes, sir. I have gone sort of through. material Sir, for I this, have gone for through. preparation of this? Yes, sir. Yes, sir. Can you refer what is that? सर आई हैव मैं रेफर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने काफी सारी साइट्स जो हैं उनको मैंने गो थ्रू किया था. मेरे प्यारे बच्चे, जब अंधाधुंध गो थ्रू करें, रेफरेंस हमारे पास ना हो, तो फिर हम इसी तरह से तकरीर तो कर सकते हैं, बात कन्वे नहीं कर सकते. You are making a well and organized speech, but according to me, you are not Yes, sir. meeting the criteria of the presentation. The reason behind is that you don't have any reference, you don't have any points to be covered in this presentation. In general, I believe that you can speak for an hour on this sort of focus group. It doesn't matter. But I think so here in this presentation, Sir, मैंने we wanted to learn Yes, sir. something about the criterion, about the standards, about the techniques, about the skills, and way forward. But I think so you are just making a speech on this. But anyway, go to the next slide. Sir, okay, sir. Focus group versus observation. So here, focus groups are formally organized and they take place outside of the natural setting and are controlled by the researcher. Like how focus groups are formally organized and how they take place outside of the natural setting is the first point to elaborate here. It is in a way that for focus group discussions, participants get recruited for discussion on their behaviors, on their beliefs, on their demographics. Demographics means like on the uh, on their age, race, or gender factor, and to ensure that the maximum number of different ideas or reactions from the participants a moderator can gain. Like it is very hard to get actual answer from the respondents because they always tend to modify the answers according to the situation. But yes,
it is better to use focus group when one wants to get a more realistic response from the participants. Here, I want to code an example. For example, if some coffee brand wants to know about its services and about its product, so focus group will choose people who visit that place or who is regular customer and who know about coffee and here the age factor or gender will also like consider and yes, they will definitely not choose a kid to tell them about coffee. So this is how for focus groups are formally Can organized. you can you We, can you focus can you researchers define can- can you define the focus group? What do we mean by the focus group? yes, sir, it is an interaction between some individuals, specific individuals, On the base on the and basis a of what? researcher. On the basis of what? What are the grounds Sir, on which the people are selected for a certain type of focus group? What are the grounds? sir, like to gain information about a specific focused issue that could not like be discussed. You are replying about the objective. I am asking about the standards or criterion on this basis of which the focus group people are selected. Your reply is about the objective of the focus group. Yes, sir. Yes, sir. Sir, focus group basically. I catch this question from your example. You are trying to quote in regarding a coffee shop. You are asking about yes, sir, वो हम वो मैंने लोग ले लेंगे, वो हम वो सारी लोग अभी मुझे हम समझ नहीं आई तो फिर गलत बात मत करें प्रेजेंटेशन में, बाकियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू। सर मैंने तो मतलब एक्सप्लेन किया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या उसे कहते हैं। सर बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि focus group discussion participants like they get recruited. ऐसे नहीं होता कि आप नेचुरली तो ऐसे ऐसे होता है ना कि आप मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं कस्टमर्स को कि वो क्या आपके प्रोडक्शन को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे फोकस ग्रुप बेसिकली ये करता है कि वो रेगुलर जो उनके कस्टमर्स होते हैं या जो उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं वो उन पार्टिसिपेंट्स को जो है वो रिक्रूट करते हैं उनके बिहेवियर्स को देखते हुए, उनके एज फैक्टर को देखते हुए, उनकी लाइक जेंडर को देखते हुए। जाहिर बात है कि एक लिपस्टिक का ब्रांड है तो वो जब भी मतलब अप्रोच करेगा तो वो फीमेल जेंडर जो है उससे अप्रोच करेगा टू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट। सो यहाँ रुकें सर दिस एक इज मिनट, व्हाट। एक मिनट यहाँ यस रुकें। सर। काफ़ी में या यस सर। लिपस्टिक में आप सिर्फ उन लोगों को फोकस ग्रुप में लाना चाह रही हो जो उसके कस्टमर हैं, जो उसके कंज्यूमर यस हैं, सर। यस यही बात है। यस सर। अगर यस यही सर। बात है तो कैसे वो कंपैरिजन दे सकेंगे, कैसे वो उसके ड्रॉबैक्स एज कंपेयर्ड with compared to the other brands and other क्या कहते हैं प्रोडक्शन, वो कैसे अपना इनपुट दे यस सकेंगे? सर। तो ये तो आप कस्टमर की राय ले रहे हो, ये फोकस ग्रुप सर थोड़ी वही। है। कौन कहता है इसको ये फोकस ग्रुप होगा? इसके लिए आप वहाँ रख दें सेल्स काउंटर पे उनके लिए एक रिव्यू फॉर्म रख दें या कमेंट्स फॉर्म रख दें, वो कमेंट करते जाएंगे, इसको फोकस ग्रुप कहेंगे। सर यहाँ पे नॉलेज का फैक्टर भी आ जाता है ना, खुदा लाइक का खौफ करें, यहाँ पे नॉलेज का फैक्टर भी आ जाता है। आप खुद तो डिसअपॉइंटेड हैं, आप दूसरों को भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप इसको रहने दें, मजीद ना करें। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। आप कोई टॉपिक और ले लीजिएगा, मेहनत करके उस पर बनाइएगा, फिर बात कीजिएगा। ओके सर। आई एम वेरी सॉरी। तो इस तरह ना अपना टाइम ज़ाया किया करें ना दूसरों का। मैं बाकियों को भी यही कहूँगा, फोकस्ड, टू द पॉइंट, रेलिवेंट टू द कंटेंट। मतलब हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, हमारा उस टॉपिक के बारे में पर्सनल नॉलेज बहुत हो सकता है, उसको हम स्पीच की शक्ल में दूसरों के सामने 2 घंटे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम जब रिसर्च टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो हमें टेक्निकल पॉइंट से आगे निकलना
बाद में चाहिए, पहले टेक्निक्स जो हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स और जो है वो ज़रूर लेके आने चाहिए। तो नो डाउट आपने अपना, इंट्रोडक्शन था, मैंने अभी उसको आगे कंटिन्यू करना था। नहीं आपको खुद क्लियर नहीं है, आप जो दोनों एग्जांपल्स दे रही है वो फोकस ग्रुप की एग्जांपल्स ही नहीं है। फोकस ग्रुप की डेफिनेशन पे वो एग्जांपल उतर ही नहीं रही, तो मैं कैसे आपको अलाउ करूं कि आप दूसरों को भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तो खराब करें। फोकस ग्रुप का डिजाइन एक्चुअली मैं बता रही थी कि किस तरह से वो हो सके, कहते हैं ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं basically। हाँ तो एग्जांपल रेलिवेंट हो तो फिर तो समझ आती है ना, कैसे उसको लेके चले आप। ओके सर। आयशा, हु इज द नेक्स्ट? I don't have a contact with Anam. I tried to, but she's not giving any reply. So I have no Okay. idea. Only I think she's left and Azhar Abbas as well. अदर अब्बास, आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, किधर है? Sir, I had mailed you my presentation जी yesterday. जी, Sir, कल आपको मेल किया था सर मैं presentation. मुझे तो अभी 2 मिनट पहले तक कोई ईमेल नहीं मिली। मैं आपके सामने खोलता हूँ ईमेल बॉक्स और आप चेक कर लें कि आपने कहाँ किया था वो। अगर काम नहीं करना होता तो वॉलंटियर नहीं करना चाहिए, दूसरों का टाइम भी ज़ाया करें, अपना भी करें। सर मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सेंट मेल का. स्क्रीनशॉट आप क्यों भेजते हो? मैं इधर खोल रहा हूँ ना आपके सामने। ओके सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. ये देख सकते हैं आयशा, आप ज़रा देखिएगा, शो हो रही है ईमेल बॉक्स? जी सर, वही है. यहाँ नाम ज़रा ढूंढिएगा, अदर अब्बास का Yes, sir. नाम कहीं है? नहीं सर, इसमें तो नजर नहीं आ रहा. यस सर, नहीं अनम है. का जी, अदर अनम अब्बास है. आप खुद ज़रा देख लीजिए, है किसी का नाम यहाँ पे? नहीं है सर. फिर आपने कहाँ भेजा है? नाम यहाँ सर, शायद मैंने मेल गलत कर दिया हूँ. आप तो दोबारा फिर कर, अभी कर. मैं दोबारा कर देता हूँ. आप तो स्क्रीनशॉट भेजने लगे थे कि मैंने भेजा हुआ है। सर मेल शायद मैंने आईडी में कोई मिस्टेक कर दिया. अकल से काम लेते हैं, आपको कल ये भेजना चाहिए था ताकि मैं डाउनलोड करके वहाँ चढ़ा चुका होता। मत वॉलंटियर करें, मत वॉलंटियर करें जिसने काम नहीं करना। मुझे सख्त नफरत है इस एटीट्यूड से कि हम वॉलंटियर भी करें और हम मेंगनियाँ भी डालें। मुझे ये ज़रूरत नहीं है इसकी। जल्दी से ईमेल करो। आयशा, आप एक नोट करें बात। ओके सर. जी सर, मुझे लग रहा है अनम है क्लास में. Yes sir. आप मेरी बात नोट करें ना आयशा, बात सुन लें। Yes I want to present. आपकी ये प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे असिस्ट कर रही हैं आप इस सारे में। आपने क्लास से एक दिन पहले मेक श्योर करना है कि जिन्होंने वॉलंटियर किया था उन सब लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो भेज दी है। वो आपको व्हाट्सएप करेंगे, मुझे तो ईमेल करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे। जी ठीक है. जिसकी व्हाट्सएप आपको सैटरडे ख़त्म होने तक आ चुकी है, यानी रात 12 से पहले पहले आ चुकी है, वो अगले दिन प्रेजेंट करेगा, दूसरा प्रेजेंट नहीं करेगा। जी ठीक है? हाँ। ओके सर. और एक दफ़ा आप ग्रुप में जो भी जैसे भी है आप लोगों का वो सर्कुलेट कर दिया करेंगे जी, ये लोग हैं, इनकी प्रेजेंटेशन आनी है, आप भेज दें। जी सर. हाँ, मैं नहीं चाहता क्लास के अंदर ऐसे खामखा टाइम भी हम ज़ाया करें और काम भी ना करेंगे। क्या बात? जी कौन बात कर रहा था? और Anam, I think sir, Anam was there. तो Yes बोले sir. ना भाई, उसको किसने रोका? बोले। Yeah. जी Anam. जी. I आपका am presenting. My आपका topic is focus group. आपका इशू क्या है? मसला क्या आपके साथ? 3 दफ़ा आप आई और गई हो, फिर गायब हो गई हो।
Excuse me, sir, internet का issue है just मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर मैंने स्पेस भी चेंज की है लेकिन ठीक है, फिर रहने दें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता सर रहे हैं। अब चल रहा है नेट, सर अब इशू नहीं होगा इसमें तो। ये किस नाम से है आपकी प्रेजेंटेशन? अनम शहजादी। I have Anam. My topic is focus group. I am going to talk about group thing. अब शुरू करोगे? क्या मसला है अब? Yes, क्या sir. Sir, please next slide. यहाँ से शुरू करो। शो हो रही है स्लाइड? Yes, sir. करें, शुरू करें, जल्दी करें। Conducting focus group. Selecting participant. The moderator should hire the participant from existing list of individual, like the individuals you want to study. And moderator contact groups for name of possible participant and convenience sampling, email or flyer in an area. The moderator selecting the participant for focus group is called convenience sampling because it means you select those member of community you want to think provides you with best information, and it is not random selection in focus group. So next slide please. क्या मसला है भाई? हेलो, यार ये क्या ड्रामेबाजी है? अनम, इन्हीं कामों से मैं बचना चाह रहा था कि ना कोई अपना हेजिडेंट हो और ना किसी का नुकसान हो। हेलो, ये अजहर अब्बास साहब की तो अभी तक ईमेल नहीं आई। मिस्टर अजहर अब्बास, सर ये सेंड कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। आप मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करके बता रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी सर हो रही है यहाँ पे? नहीं सर, जी सर ये शो हो रही है।
जी शुरू करें। हैदराबाद शुरू करें। Bismillahirrahmanirrahim. I am Al-Habas. I am supposed to discuss the advantages and disadvantages of the interview. As my colleagues have discussed regarding the interviews and there are some advantages, I appreciate all of them. And if we talk about the advantages of the interview, there are several several types of interviews, several steps of the advantages. And the first advantage of the interview is the opportunity of the feedback. Sir, may I have next slide? Sure. Next, sir. Okay, here we are talking regarding the first advantage of the interview method, that which usually called the opportunity for the feedback. And the opportunity of the feedback, interviewer can provide direct feedback to the respondent instead of indirect feedback. At the interview, the interviewer give direct feedback for the clarification and to evaluate any misconception. It means that the interviewer tries to clarify all the ideas to evaluate the misconception from the mind of the respondent. The second thing is the probing complex answers. Means here in this session, interviewer investigates to get the main points. Means the interviewer tries to get the main points from the respondent, from the detailed answers of the detailed and unclear answers of the respondent, to clear the answer and to get the main idea from his answer, his detail. And the third thing is the complete questionnaire. In the complete questionnaire, personnel ensures that the respondent will answer all the questions. Means he will not just tell the answer of just 2 or 3 questions. He is supposed to answer all the questions asked by the interviewer in the session, and will all answer all the questions. Unlike in telephone, where the respondents may hang up in mail questionnaire. In mail questionnaire, where some questions may go unanswered, an interviewer may not get his proper answer from the respondent due to the problems which the respondent and the interviewer will face in the telephone as well as the mail questionnaire. It will not be possible for the interviewer to get the main points from the respondent. The next step is props and visual aids. Here, as it is the part of the interview as well, to show the graphs, and the samples. In the props and visual aids, the interviewer shows some some props and the visual aids, which can add in their answers, And in the next, high participation. In the high participation, interviewing response personally can increase likelihood of their participation, as many people prefer to communicate directly to get the clear answers from the participation. So that the purpose of the clear participation is that to get the proper meaning, the proper point, the main thing from the answers from the long questions, unclear questions of the respondent. As there were some advantages of the interview session, which adds in the interviews of the participant, interviews of the interviewer. There are also some disadvantages of the interview. The first disadvantage is the cost. The cost
usually we use cost for the expenses. The problems, the economic problems faced by the interviewer is usually we call the cost. The interviewers are supposed to visit different cities for the interview purpose, where they interact with different people and the different respondents. So it impacts the economy, the cost, and the time of the interviewer as well. प्लीज जस्ट अ Second, मिनट अजहर अब्बास, yes, sir. यार सुबह का मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अपना वीडियो ऑन करें, तो क्या मसला है, आप क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रहे? Sir, actually I had cam issue. It will close after few minutes. It hurts me. That's why I will open it, sir. But because of some software programs, it will close. मैं पहचानना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बाज़ औक़ात ये ना हो कि छोटा भाई प्रेजेंट कर रहा हो. Okay, sir. Okay. Sorry, sir. Okay. Okay. जी प्लीज. Sir, I was talking regarding the disadvantages. As I have talked about advantages before, and it's time to discuss the disadvantages. The first step of the disadvantages is the cost. In the cost, I said that it is about the economy, the problems of economy or the time, which is caused by the interviewer during his interviews, during the interaction with the participants in different areas at the locale. And the second thing is the lack of anonymity. Here in the anonymity, respondents are not anonymous in a personal or the face-to-face interviews. Means they don't have relations with the respondents, but during the interviews, because of which the respondents will not respond to the interviews according to the perception, according to the need of the interviewer, and they may be reluctant to disclose certain ideas to the interviewer, so that the interviewer must be sensitive when asking questions to avoid bias affected on the respondent's part. And the other strike is the necessity for the callback. It's not possible to visit the interviewer at a locale or the site at the time, so that he should manage, he should schedule, he has to be scheduled a callback schedule at time, which result in extra cost and time spent as well. And the next step is the variance effect. Just read these for headlines, please, because after 1 minute this session will expire. Okay, sir. Variance effect. It has been shown that demographic characteristics of the interviewer can influence the answers of the respondents. In one study, male interviewers had a much larger variance of the answers than female interviewers in a sample of the most female individuals. And one conclusion. Conclude it, please. So we can use the interview techniques as one of the data collection method for the research. And it makes the researcher to feel that the data, what he collects, is true and honest and original by nature because of the face-to-face interaction. If somebody wanted to comment on this, please come on. Have a comment, whatever type you want. Aisha, you may comment if no one is coming. Sir, I think it was well presented. His confidence level was good, and secondly, the things are pretty clear. He stated everything clearly. बस आप ना रेडीमेड कमेंट्स अपने पास 8-10 बना के रखें.